Hello friends, welcome to my channel Pritam Finsa. With this channel I try to share my views on Nifty, Bank Nifty or associated stock market. I try to apply technical analysis, and here today I am going to share my messages on the WhatsApp group. This is basically a paid group. So on yesterday, that is Friday, what messages were shared on my WhatsApp group? As I already informed, this is a paid group. So I was busy from 9 to 10 a.m. yesterday. So it was informed to the clients that I will be able to join at 10 a.m. And then see, this Nifty short call was given after 10 a.m. with stop loss of 590, and I was expecting 10,527 and second target 500. Okay. See, at actually I applied this stop loss. The screen was also shared with the clients. Okay. And it was informed that there is a divergence in Nifty and Bank Nifty as rightly identified on yesterday. Bank Nifty is weak. Okay. But Nifty is not ready to lose its strength at present. ये भी clearly कहा था. आप टाइमिंग भी देखेंगे ये सभी मैसेजेस के यहाँ पे. So one of them need to change the direction. Most probably Nifty is expected to lose its strength. ये मेरा expectation था. Because Bank Nifty showed confirmation for the downtrend and Nifty is trading with low volume. ये इसका supporting ये था. According to Dow theory, price must be supported by volume in order to confirm the trend. Okay. Clearly technical analysis apply करता हूँ. For Bank Nifty short sale trade, SL is very small. It is about 22,055 and current market price 21,925. Here also I had actually sold the Bank Nifty 21,925 and there was very small stop loss. Then Nifty is trading near 10,600. So this particular call here SL got triggered. Okay. It doesn't matter because the stop losses are very small and risk reward ratio is really better. Mostly I try to apply risk reward ratio 1:3. And here in Bank Nifty what happened actually, the Bank Nifty really came down and below 850, that is 21,850, I tried to book the profit. Then here it was said that this bearish hanging man, it was seen in Nifty. Okay. And again Nifty short sale was given, and then Bank Nifty put Nifty put of 10,600 price 9th July can be bought at current market price 127 with SL below 110. This was given. And see, at actually, since the screen is shared, that is the clients got at actual the entry price of 126. Okay, the set price was received by the clients. Then it was informed that today it is Friday, so generally both side movements can be seen. Since morning Nifty showed its strength, so in the second half it can show a correction. Okay, ये भी clearly बोला था. Or in every trade I try to apply the stop loss. This is really very important. Many of the traders, what they feel that stop loss is just kept in mind, and then mind is really very fluctuating, and then you can just keep on changing the stop losses. Okay, so it is always better to apply the stop losses, and all the successful traders, they actually apply the stop losses. This is very important thing to become a successful trader. And it doesn't matter even if your stop loss gets hit, that actually shows that the view is wrong. Okay, and one can really rethink on the thing, on the issue. So here 127 price was recommended and stop loss was just 110. Okay, and then it bounced. Okay, it bounced to 145 and even 154 where we have actually booked the profits. Okay. Then quantity lot for Bank Nifty put
of 22,000 strike price 9th July was given. Current market price 445 to 55. Okay, and it was informed to the clients that 485/520 seems possible. Okay, this was a quantity call. Remember, in Bank Nifty put, every 10 point equal to 200 rupees. Okay, and currently it was trading at 445, approximately 9,000 was the required investment. Okay, so 485 got achieved. Okay, next rapid upward movement expected above 495. Okay, and it was expected 570. This can be possible. However, for quantity call, the targets given were 485 and 520. And at actually 520 also got achieved. Here I have shared the screen where it is trading at above 500, and Nifty short call was also given. Then Nifty also started to go down. Okay, you can clearly see that this Nifty Bank Nifty put, which was recommended at 445, it is trading at a price of 488 to 490, achieving the target of 485. Whatever the things that I try to give, I myself trade on the views. Okay, and just for the confirmation, I even share the live market screens with the clients. Okay, Nifty is also going. Nifty was also going down. Then it was informed that keep patience and handle the Nifty short sale, because I am expecting 10,527 to 500. Okay, Nifty put is also trading above 140. Nifty put was given. You can observe here 126 was the recommended price for Nifty put here. Okay, and in Nifty put, every 10 point equal to 750, because batch size is of 75. So 126 127 से लेके 140 तक वो बढ़ा हुआ है, और बाद में वो 150 के ऊपर भी गया. वहाँ पे हमारा जनरली टारगेट रहता है 20 रुपीज़ पे निकल जाते हैं, 1,500 रुपये निकल जाता है उसमें से. अब ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही कितनी थी, 127, यानी करीब करीब 9,000 के आसपास आता है. 9,000 इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको 1,500 से 2,000 रुपये मिल रहे हैं एक ही दिन में, तो दिस इज एक्सेलेंट प्रॉफिट, isn't it? Profits are always calculated in terms of the percentage. Okay, और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी को भी हमने शॉर्ट बोला था. यहाँ पे देखिए क्या बैंक निफ्टी इज एक्सपेक्टेड टू अचीव 21,800 और 21,650 इंट्राडे. तो 21,800 तक आप वेट करिए. और यहाँ पे देखिए 21,800 भी लग गया था बैंक निफ्टी में. ओके, लो कौन सा बना था, 21,750 का लो बना था. और निफ्टी ने लो बनाया 10,533. आई वॉज एक्सपेक्टिंग 527 एज द टारगेट. तो हम 10,540 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते थे. वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके हम यहाँ से निकल गए. ओके, और उसके बाद क्लाइंट के साथ ये क्लियरली शेयर कर दिया कि ये देखिएगा कि शायद अभी उसके बाद क्या कर रहे थे कि निफ्टी देन लेटर ऑन बाउंस्ड. यस, निफ्टी अगेन बाउंस्ड फ्रॉम 10,533. वहाँ से बाउंस लेके वापस 580 की तरफ चल रहा था. तो इसीलिए यहाँ पे क्लियरली कह दिया कि देखो 3 से 3.5 के बीच में ही शायद गिरेगा, क्योंकि सिंस इट वाज फ्राइडे, मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, फ्राइडे को मार्केट कई बार फिर आखिरी के सेशन में हॉरिजॉन्टल भी रख देते हैं, और नेक्स्ट ओपनिंग सेशन में, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे वो गैप डाउन ओपनिंग कर देते हैं. ऐसा भी कई बार लोग करते हैं, लोग यानी बड़े ट्रेडर्स. सो बेसिकली द की पॉइंट of success in the market is you should be able to identify rightly the trend reversals as well as what big traders are doing. Okay, if you try to apply similar strategies what big traders are doing, then it is easy for you to catch the trend and you can quickly earn the profits. Patience भी बहुत important चीज होती है. So this is how almost all the targets were done. बैंक निफ्टी में देखिएगा 21,925 पे हम शॉर्ट में बैठे थे और 21,800 पे पोजीशन निकाली. एवरी 100 पॉइंट इक्वल टू 2,500, बिकॉज बैंक निफ्टी फ्यूचर का लॉट साइज है 25 का. तो एवरी 100 पॉइंट्स बिकम्स 2,500, 2,500 रुपये होते हैं. और हमने करीब करीब इसमें 130 पॉइंट निकाले.
उसी तरीके से निफ्टी में भी 580 पे हम शॉर्ट पे बैठे थे, ओके, और 580 से 70 से लेके 580 के बीच में शॉर्ट में बैठे थे, और यहाँ पे 540 के आसपास आप पोजीशन निकाल सकते थे। तो वहाँ पे 30 से 40 पॉइंट आपको निफ्टी फ्यूचर में मिल रहे हैं। निफ्टी के 10 पॉइंट यानी 750 रुपये होते हैं, अगर 40 पॉइंट करेंगे तो 3000 रुपये निफ्टी फ्यूचर में मिले। बैंक निफ्टी का पुट भी बोला था, बैंक निफ्टी का पुट क्या कहा था कि 445 पे बाय करने के लिए 445 से 450 पे बाय करो, और 520 तक के टारगेट थे। ये देखिए 520 के टारगेट्स भी अचीव हो गए थे बैंक निफ्टी पुट में, ओके। तो बैंक निफ्टी पुट में आप देखिएगा 9000 इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको करीब करीब 50 से 70 पॉइंट मिल गए, यानी 1000 से लेके 1400 तक के रिटर्न्स यहाँ पे निकले एक लॉट पे। और यहाँ पे क्वांटिटी लॉट बोला था, क्वांटिटी का मतलब है 5 to 10 लॉट्स। अगर किसी ने 5 लॉट भी किए होते तो वहीं पे उसके 5 से 6000 रुपये निकल जाते बैंक निफ्टी पुट में। तो ओवरऑल अगर फ्राइडे का सेशन देखेंगे तो इट वाज रियली वेरी गुड सेशन, और प्रॉफिट इट वाज रियली गिविंग अस ए वेरी गुड प्रॉफिट। और ये जो है हम ट्रेड करते हैं, तो इस ट्रेडिंग सेशन में हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, मैं खुद ट्रेड करता हूँ मेरे व्यूज में, और कंसिस्टेंटली हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दे कैन जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज, ओके। These definitely these are all paid services. You can also try to make money from the market. हमारा ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए हमारा टैगलाइन ही है कि द आर्ट ऑफ कंसिस्टेंटली मेकिंग प्रॉफिट। If you are interested to take benefit of it and really try to earn from the stock market, then you can join us. Drop a message. Thank you very much. मैं इस वीडियो को स्वामी विवेकानंद जी के इन विचारों से पूर्ण विराम देना चाहूँगा। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो डरो मत मेरे दोस्त। If you like this video, please click on the like button to subscribe to my channel and share it with your other friends. Don't forget to click on the bell icon so that you will get the notification as and when I upload any new video. Thank you very much.